वेलकम टू कोड डेटा हब। मेरा नाम है ओमकार और ये है हमारी सीरीज़ DSA द स्काला वे का 18th एपिसोड। आज की सीरीज़ में हम सॉल्व करेंगे एक ट्री का क्वेश्चन और ये अभी तक की हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में फर्स्ट ट्री का क्वेश्चन होगा। तो द क्वेश्चन नेम इज़ बाइनरी ट्री लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल और देखते हैं इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। So given the root of a binary tree, return the level order traversal of its node values, which means from left to right, level by level. Okay. So before that, first let's see what is a tree. तो ट्री इज़ लाइक अ लिंक लिस्ट बट इट हैज़ मल्टीपल लेवल्स। ओके, तो इसमें एक पेरेंट नोड होता है और उसके चाइल्ड नोड्स होते हैं एंड देन सो ऑन, उन चाइल्ड नोड्स के भी कुछ और चाइल्ड नोड्स होंगे। सो फॉर दोज चाइल्ड नोड दे बिकम द पेरेंट नोड। लाइक जैसे यहाँ पे एग्जांपल में समझते हैं। सो दिस 3 इज़ अ पेरेंट नोड। ओके, it has two childs, one is 9 and one is 20. Now 9 has no childs but 20 has two childs, 15 and 7. Okay, and in binary tree each node will have either 2 or 0 childs. Okay, so that's what a binary tree is. और यहाँ पे लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल का मतलब क्या होगा कि हर एक लेवल पे जितने नोड्स हैं पहले हमें उन्हें ट्रेवर्स करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे मूव करना है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पेरेंट नोड or base node which is 3, then we will traverse 9 which is left and then right, and then once, so first since 9 does not have any child, so we will go to the next level where 20 has two child, so we will read 15 and then 7. तो इस तरीके से हमें ट्रैवर्स करना है और हमें हमारा जो आउटपुट है उसको एज अ लिस्ट ऑफ इंटीजर रिटर्न करना है। ओके, सो ईच लेवल विल बी अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, राइट। जैसे यहाँ पे आप आउटपुट में देखो, सो फर्स्ट लेवल हैज़ ओनली वन नोड, सो दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ वन इंटीजर 3। देन सेकेंड लेवल हैज़ टू नोड्स, सो 9 एंड 20, एंड देन थर्ड लेवल हैज़ टू नोड्स, सो 15 एंड 7। तो इसको ऐसे हमें ट्रैवर्स करना है। सो इट्स अ ट्रैवर्सल क्वेश्चन एंड यूजुअली भी हम लोग जब ट्री ट्रैवर्स करते हैं तो वी यूज़ रिकर्जन ओनली, दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच और वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच वी कैन से। तो हम हमारे सोल्यूशन में भी रिकर्जन ही यूज़ करेंगे सिंस वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स द स्काला वे, सो वी आर नॉट यूजिंग एनी लूप्स और एनी म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग अवर सॉल्यूशन। So for traversing the tree, we need a helper function which we will call recursively. So let's call this function traverse level because we will be doing level order traversal. ठीक है, और इसको we will pass nodes which will be a list of nodes. Okay, and what this will return? This will return a list of integers. So now let's start writing the solution. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस केस विल बी, हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको एक लिस्ट ऑफ नोड्स पास करेंगे। सो वी हैव नॉट डिस्कस दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ट्री नोड, ईच नोड व्हाट इट कंटेन। सो ईच नोड विल हैव अ वैल्यू एंड अ पॉइंटर टू द लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड। ओके, तो लेफ्ट और राइट चाइल्ड का एड्रेस या रेफरेंस होगा उसमें। तो यू कैन सी दिस इज द वैल्यू एंड इट हैज़ लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड, राइट। सिमिलरली फॉर अदर लेवल ऑल्सो वी कैन सी। तो यहाँ पे वी आर पासिंग अ लिस्ट ऑफ ट्री नोड to our function. Now the base case will be if the node is empty, right, which means there are no childs and no value, so we will return nil. Otherwise what we will do is we will take the current value of the current node, and then first we will check for the left and then for the right. Okay, so for current value what we will do, we will say current level values, और यहाँ पे we can use map. So map function will get us the values, and then we will collect the next level values. So let us say next level nodes. So here we will use flat map, and what it will do is, तो हमारा जो लिस्ट है उस
इसका लेफ्ट एंड राइट, तो करंट वैल्यू आ जाएगी और उसके लेफ्ट में जो वैल्यू है वो आ जाएगी एंड राइट में जो वैल्यू है वो आ जाएगी. सो दिस विल बी एट लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल and we can filter out all the null values. So for example, if we see when we are collecting values of left and right of this node, we will get null, right? But in our output we don't need null because we know there are no childs for this node. So we can filter out the null values. Okay, now the next step will be, हमारे पास current value है and for the next level nodes we will call this function again. So what we will do is current level values, these are already present in a list, right? And then we will use cons operator using which we can create a list head and tail, right? And here we will call traverse level for the next level nodes. So this will return a list and we already have a list, so this will get concatenated, right? So this is our solution, and one base case or edge case we can cover if the root itself is null. So what we'll do, we will return null, otherwise we will call this function on the root. List of root. Okay, so I have done some reformatting. Now let's execute the solution. You can see all the three test cases are getting passed. यहाँ पे जो empty list और empty tree वाला case है, that is also covered. So all the three test cases are passed. अभी इस solution को submit कर देते हैं. Okay, this solution is successfully submitted. So this is how we can do a level order traversal of a tree the Scala way. तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनी सजेशन फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन. इस वीडियो को और इस सीरीज़ को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, एंड कोड डेटा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.